Hi guys, welcome back to my channel and I'm Pallavi Das with you guys. So guys, as you know, Mars like literally धड़ाधड़ new launches किए जा रहे हैं. Like एक deliver होता है तो दूसरा product launch हो जाता है. Like you cannot understand which one to try and which one to leave, right? So अभी फिलहाल तो Mars का जो most hype product है वो है Mars Mousse matte lipstick या Mars matte mousse lipstick, and it is like really amazing and I have got my hands on 4 shades from them. Like mostly ये सारे shade brown skin girl friendly है, तो ये इंडियन स्किन टोन्स को बहुत अच्छे से सूट करेगा. सो लेट्स नॉट फॉरडू एंड लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू. वेल, दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. दिस इज द इनर पैकेजिंग एंड यू कैन सी इट इज लाइक अ कलर कोटेड बॉटल विद अ ट्रांसपेरेंट कैप इन इट, एंड इसके नीचे सारे शेड्स नेम दिए हुए हैं, सो you can identify them with the colors as well as the shade name over here. Well, color coordinated packages से अगर देखा जाए तो this is the shade which I'm wearing. This is shade number 4 and it is called Trendsetter, and this is how the outer packaging and inner packaging looks like. The outer packaging is more on the neutral brown side and the inner packaging is more on the warm brown side, and this is how the shade actually looks like with makeup. I'll show you the swatches later, like सारे swatches मैं आपको with makeup and without makeup दिखाऊंगी, but अभी के लिए like this is the shade which I'm wearing, shade number 4, and this is like a warm brown shade. I would say it's a warm caramel shade and it is really pretty. So ये तीनों शेड्स थोड़े हल्के फुल्के डिफरेंट है. लाइक अगर आप आउटर पैकेजिंग को देख के शेड ले रहे, सो यू शुड स्वॉच देम वंस ऑन योर हैंड बिकॉज the shades are little like tad bit different. Well, this Mars lipstick is supposed to be a dupe of Fenty Beauty Velvet lipstick. Texture wise देखा जाए तो हाँ, थोड़ा बहुत similarity है, काफी similarity है actually, but Fenty Beauty वाला थोड़ा सा lightweight है, but this is more blurry. Like if you see the difference, I'll just swatch it and show you. This one is the Fenty Beauty one. आप shade match मत कीजिए because obviously the shades are very different. This is the Fenty Beauty one and this is the Mars one. This one is more blurry if you see, and this one is little bit blurry. आप इसको नायका कॉस्मेटिक्स का जो सुपर लाइट वाला लिक्विड लिपस्टिक का रेंज है, it looks a lot like that, the Fenty Beauty one, but the Mars one doesn't really dupe the Fenty Beauty one. It's very near to it but not an exact dupe. The exact dupe is the Romand Velvet tint, which I don't have but I've heard, and I don't know if it is an exact dupe or not. I'll share the picture over here. So, texture अगर देखा जाए बहुत ही blurry finish है, if you can see, but it is not at all transfer proof. Like if you see, ट्रांसफर होता है अच्छा खासा, एंड दिस वन आई एम ऑलमोस्ट वेयरिंग मोर देन एन आवर ऑलमोस्ट राइट नाउ, एंड इट हैज स्टार्टेड रिमूविंग. लाइक थोड़ा सा इसका जो कलर है थोड़ा लाइट हो गया है इधर से. लाइक ओवरऑल थोड़ा कलर जो है वो छूटता जाता है, इट बिकम्स लिटिल लाइट लिटिल बाय लिटिल, एंड ऑल्सो इट इज नॉट एट ऑल ट्रांसफर प्रूफ. सो गाइज अब देख लेते हैं इसके स्वॉचेस. आई नो यू गाइज आर वेटिंग टू सी द स्वॉचेस. आई शो यू विथ एंड विदाउट मेकअप, सो कीप ऑन वॉचिंग फॉर द स्वॉचेस. So guys, if you want to try the Korean tints like velvety tints, then you can definitely try this out instead of that, because this is more affordable and it has more good color payoff than the Korean tints. But अगर आपके पास already कोई मूजी lipstick है, जैसे Lakme के पास है already, Nykaa has mousse lipsticks, then you can definitely skip this. If you guys do not have that, then you guys can definitely try this out because it's really good. So guys, at the end I would like to say that अकॉर्डिंग टू द प्राइस प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है. लाइक द फिनिश, द कलर पे ऑफ इज रियली रियली गुड. लाइक कोरियन टिंट्स में इतना कलर पे ऑफ नहीं मिलता जितना आपको इस वाले में मिल रहा है. सो अकॉर्डिंग टू द हाइप, so if I go according to hype, then definitely this is worth the hype. You guys can definitely try this out. So guys, I want to tell you one more thing, that this lipstick is little heavy on the lips. So आप लोगों को क्या करना है, बहुत ही thin सा layer अप्लाई करना है. Otherwise अगर आप ज्यादा layers अप्लाई करोगे ना, तो it will become little crusty and it will not look nice, it will not look smooth. So आप लोगों को थोड़ा पतला सा लेयर अप्लाई करना है इसका, नहीं तो इट विल लुक वेरी बैड एंड पैची. ऑल्सो द बेस्ट पार्ट आई लव अबाउट दीज लिपस्टिक दैट दीज आर प्रिटी ब्राउन गर्ल फ्रेंडली, सो दैट इज द रीजन दीज आर वेरी हाइप्ड राइट नाउ.
एंड बाय द वे ये सारे वेबसाइट में आउट ऑफ स्टॉक हो गया है. यू गाइज कैन नाउ गेट इट ऑन Amazon आई थिंक, बिकॉज when I went to buy, ये सारे out of stock हो गया था. I got this from Amazon. You guys can check it out. I'll share the links in the description. So do check it out. So guys, that was all about this video. If you guys like this review, it was short and crisp. So if you guys like this review, do not forget to give a big thumbs up. Share with your friends and family and comment down what is the next product that you guys want me to review, because honestly speaking guys, these products are all bought by my own money and I review them genuinely so that you guys don't waste your money in these. So yes, that is the reason. So guys, I want you all to support me a little and help me to grow. So don't forget to subscribe to my channel and share with your friends and family and ask them to subscribe as well. And guys, do not forget to hit the bell icon beside it so you get notified every time I upload a video, because I'm going to upload a lot of review videos right now so that you guys can get the best of the best products. Till then, stay healthy and stay beautiful. Bye bye.